गुजारिश करूँगी काबिल एहतराम मोहतरमा मासूमा साहिबा, चेयरपर्सन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरमा मासूमा साहिबा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बहुत बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे एक इतने अजीम शख्स के बारे में बोलने के लिए मौका दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ उनके काम को, जो वो पूरे शहर कराची में और दीगर हो सकता है सिंध के दूसरे हिस्सों में भी वो जो फलाही काम करते हैं, उनको मेरा सलाम। खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ उन बच्चों को भी जिन्होंने आज की स्किट्स पेश की, एंड आई थिंक वी शुड गिव देम अ वेरी बिग हैंड। ख़ास तौर से वो जो ड्रम्स वाला सेशन था, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। देखिए, जब हम जमशेद नुसरवांजी साहब की ज़िंदगी पर नज़र हम डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे नज़र आती है उनकी वर्सिटैलिटी पर। उनकी शख्सियत निहायत वर्सिटाइल थी। उन्होंने हर शोबे में काम किया, और ये सिर्फ़ एक बहुत बड़े जहन का आदमी कर सकता है, और बहुत वो शख्स कर सकता है जिसके दिल में लगन हो। ये हर एक आदमी का हिस्सा नहीं होती। छोटी छोटी बातें, मसलन कहाँ उन्होंने नहीं काम किया कराची के लिए। स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सिस्टम, सैनिटेशन, पार्क्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज़, मैटरनिटी होम्स, एनिमल केयर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, यहाँ तक कि वो लेपर्स के साथ काम करते थे, कोढ़ियों के साथ। हम तो कोढ़ी के पास जाना भी नहीं गवारा करते मारे डर के, लेकिन वो कोढ़ियों के साथ काम करते थे। वो बॉय स्काउट्स के रहनुमा थे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बॉय स्काउट्स मूवमेंट। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो शुरू हुई हमारे शहर में, वो उसके बानी थे। तो उन्होंने इन सब फील्ड्स में काम किया और अपना निशान और अपनी अहमियत छोड़ी। लेकिन जो कराची, उनके दौर का कराची था, वो एक बहुत छोटा सा शहर था। और आजकल हम सुनते हैं कि नुसरवांजी साहब के ज़माने में शहर ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। ज़ाहिर था इट वाज अ स्मॉल सिटी, इतना बड़ा शहर नहीं था। टुडे देयर आर 30 मिलियन पीपल इन कराची एस्टिमेटेड, और मे बी मोर, आई डोंट नो। तो इसका मुआवजा करना मेरे ख़्याल में एक बहुत अनफेयर बात है। 1941 के सेंसस के मुताबिक कराची की आबादी 4.5 लाख थी। 1951 के सेंसस में कराची की आबादी 15.5 लाख हो गई थी। और आबादी बड़ी हद तक जो पनाह गुज़ीन और रेफ्यूजीज़ हिंदुस्तान से आए थे, उनकी वजह से बढ़ी थी। और हमें याद रखना चाहिए कि पहली खेप जो आई थी रेफ्यूजीज़ की, वो 6 लाख थी। तकसीम के बाद 6 लाख थी। और फिर जब दिल्ली में बहुत फसादात हुए, कम्युनल वायलेंस हुआ, तो उसके बाद दिल्ली से 80,000 लोग आए थे। तो ये जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम था, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो किताब दिखा रहे थे हमारे दोस्त, उनके ऊपर उसमें लिखा हुआ है दैट द रेफ्यूजी प्रॉब्लम ब्रोक हिज हार्ट। ही वांटेड, देखिए हम आज जो भी कुछ कह लें, कराची को एक खुशहाल शहर है। उस ज़माने में हम भी बहुत छोटे थे, लेकिन हमें याद है कि लोग फुटपाथ पे पड़े रहते थे। ना खाने को था, ना पीने को था, ना पानी था, ना सैनिटेशन था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम आज समझते हैं कि हमारा हक़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो उनके बायोग्राफर ने लिखा है दैट इट ब्रोक हिज हार्ट। मेरे ख़्याल में दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी तारीफ़ की गई हो जितनी नुसरवांजी साहब की गई हो। मसलन उनको कहा गया है फ्रेंड ऑफ द पुअर, रेयर जेम, ट्रू सेंट, सेज सेंट, प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, आइडल ऑफ कराची, अनक्राउंड किंग ऑफ कराची, ए ट्रू ज्यूअल। और उनकी ज़िंदगी में उनको सराहा गया। बहुत से लोगों के काम उनके मरने के बाद याद आते हैं,
लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनको सराहा गया और उनको बहुत पजीराई मिली, जो बहुत बड़ी बात है। मैं उनके जिस एक पहलू है उनकी ज़िंदगी का जिस पे किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, और वो सियासी पहलू है। He was a great believer in the unity of India. He did not want India to be divided. He fought tooth and nail to prevent it from being divided. But once partition became a reality, he stood by it, he respected it, and he threw himself in the work of looking after the city and also looking after the province of Sindh, the problems of the people of the province of Sindh. He was also a great supporter of the freedom of the Indian subcontinent, now Pakistan, from British rule. He fought for the separation of Sindh from Bombay, which took place in 1936. So he had this political aspect to his career also, which we should not overlook, because some of the best decisions in the world are made through political processes. He was a supporter of the political process. Today people tend to denigrate it, but all great decisions, everything that we take forward has the basis of a political decision. And he realized that. I will end now, because this has been a very long session, this meeting. I will end now with a quotation, a quote really, from the late Sarwar Hasan, who wrote in his condolence letter about Jamshed Nusserwanjee. And why do I refer to it? I refer to it that the organization which I represent today, the Pakistan Institute of International Affairs, he was one of its founders. At that time, in 1947, the institute was a newcomer to Karachi. The institute came from Delhi. So Karachi was a new city for it. Everything around the city was new. But he stood by it. He was one of the founders. And his name occurs in the bylaws of the institute as one of the founders. There were 20 founders. He was one of them. Some of them were other Parsi gentlemen, also some Hindu businessmen who were founders of that institute. It was a multicultural, multi-ethnic founding group. So Sarwar Hasan wrote, he was a tower of strength to the Pakistan Institute of International Affairs and was Vice Chairman of its council from the time of its establishment. Indeed, the Institute owes a very great deal to Mr. Nusserwanjee's exertions. Besides being Vice Chairman, he was its treasurer for 1 year. He was regular in attending the lecture meetings as well as the meetings of the council. In the council, he always played an active and constructive role. His advice was always availed of and was in fact invaluable in the decision of administrative questions. You know, his personality was so multifaceted, and I'm always touched by the fact that when his funeral cortege was being taken to the Tower of Silence, it was escorted by the Sea Scouts. He was their patron, he was their president. So, in the end, thank you for this beautiful gathering, and also rest in peace, Jamshed Nusserwanjee.